Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. We were studying security and ethics, and in security ethics we have studied some topics. I am marking over here. We have studied the security aspects. In security ethics we have studied the malware. In malware we have studied viruses, spyware and hacking. And then we have studied phishing and farming and loss of data, viruses, spyware, war driving, cookies. Cookies is a very important chapter for us. Cookies is an important topic for you. Basically, you need to understand that cookie is just a text file that is stored by a website in user's computer. Right? This enables the website to remember the details about the user. Right? It is not a form of spyware. It is not used in advertisement. It is basically used to track the browser's use. But and it doesn't act like a virus. But cookie can store your password, your debit card and credit card details. Right? Cookie cannot modify the data in your computer. But cookie cannot generate pop-ups, but cookie allow a website to detect whether the viewer has viewed specific web pages. And this question was set in 2019 that cookies can be used to store customers' credit card details. Yes, cookie can store customers' credit card details. Cookies can be used to track items a customer have viewed on a website or purchased on a website. Yes. Cookie can corrupt. No, this is the function of virus. Cookie can be downloaded. Yes, cookie basically downloaded in user's computer, and user can delete the cookies. Then we have studied phishing, and we say that phishing is basically legitimate looking email. Like this email, it seems that this email was sent from the Yahoo member services, but basically this email was sent from a fake user. Uh, so we need to understand that whenever we are discussing phishing, basically, yes, bolo. Yes, bolo. Phishing is basically used in phishing. Basically, we use emails, right? Phishing is basically the legitimate looking email. Then we have studied farming, and in farming, we say that farming is basically a code that is installed in user's computer or DNS server, and it redirects to a fake website. Like here you may see that user has written a address of a website that was mcb.com.pk, but attacker has attacked the hacker has attacked the DNS server, and DNS server is sending your IP address of a fake website that was rncb.com.pk, and this website and the on the user's computer basically let me see that. अच्छा बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठीक है बेटा. Now in farming, basically
fake website is downloaded on a user's computer. Like you may see that I have displayed two different websites, and I am asking you to identify that which website is fake. These are two websites. Identify a fake website and tell me the reason why you say that this is a fake website. सर Here are ये two websites, लेफ्ट वाली फेक है A or शायद. B. A or B. A is fake. Sir, A A is is fake. fake. A is fake. Basically, B you पर may सर see वो that in B B पर there is, प्रोटोकॉल है. yes, HTTPS protocol means padlock is given on displayed on B, but in website A there is no padlock is given. And if we read the website's address, this is basically rncb.com.pk. So it is a fake website. We can only identify the website, is it fake or authentic, by the padlock. If there is no padlock, that it means this website is basically a fake website. The display of the both of the website are same. Everything is same, just the padlock is different. A padlock is not present on the fake website. Acha beta. Then we have another concept that was hacking we have studied, and yesterday we have studied the firewall and proxy server, and we have studied the difference between firewall and proxy server. सर We ये say रिवाइज that, करा देंगे आप. हाँ मैं फायरवॉल जल्दी एंड से करवा देता हूँ, जल्दी से करवा देता हूँ. देखिए, we need to understand the difference between firewall and proxy server. अच्छा, फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर के डिफरेंस को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, ये फायरवॉल है, कंट्रोल सी, एंड दिस इज प्रॉक्सी सर्वर. हियर इज प्रॉक्सी सर्वर. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके दरमियान हमें डिफरेंस का हम आइडेंटिफाई कर सकें, रिकग्नाइज कर सकें इन दोनों के डिफरेंसेस को. जी, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली इन दिस क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू identify the difference between firewall and proxy server. You will see that in the firewall, basically it is a hardware or software. It may be a hardware, it may be a software. Firewall may be a hardware, may be a software, but it is not an intermediate computer. And here you will see in proxy server, basically there is a computer between user and destination, means internet. Here between users and destination there is no computer, there is just a firewall, a hardware or a software. This is the firewall. You may see that firewall filters the incoming data and check that is it malicious or safe. If data is malicious, then firewall block the malicious data. Secondly, we can store IP address of undesirable websites. So these websites cannot be used by the users of your company. Third, in whenever an external data source want to access the data in your computer, the firewall will inform you. If you allow, then firewall will let the data, the website to see or upload or download the data, like uh, Google Drive, Dropbox, iCloud. Basically these are the websites which are accessing the data in your computer, right? अच्छा भाई, देखिए बेटा, अगर कोई भी ओरिजिनल नाम से नहीं आएगा तो मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा. बिल्कुल क्लियर है ये बात, ठीक है? जिसको भी एंटर होना है तो ओरिजिनल नाम से एंटर हो, मैं उसको अलाउ कर दूंगा, अदरवाइज मैं अलाउ नहीं करूंगा. ये पता नहीं क्या क्या नाम लेकर आ रहे हैं. अच्छा भाई, देन अच्छा भाई, अब दोनों में जो डिफरेंस है, बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अ फायरवॉल एंड प्रॉक्सी सर्वर, मेजर डिफरेंस इज दैट प्रॉक्सी सर्वर इज एन इंटरमीडिएट कंप्यूटर, फायरवॉल इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, नॉट अ कंप्यूटर. Secondly, proxy server can perform all the activities, all the functions of firewall, but there are two extra functions which are performed by a proxy server. Number one,
proxy server can hide users IP address. Like you may see that user's IP address is 1.1.1, and this IP address is blocked by, and user has sent a request to visit our website. We have studied how we visit our website. I am revising it. That what are the steps to visiting our website? अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे डिफरेंसेस ऑफ फायरवॉल एंड प्रॉक्सी सर्वर। जो डिफरेंसेस थे फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर के, वो डिफरेंसेस हमने देख लिए। हमने क्या देखा कि प्रॉक्सी सर्वर जो है वो ठीक है। जो डिफरेंसेस थे हमारे पास फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर के, उसमें पहला डिफरेंस क्या था फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर का, कि फायरवॉल जो बेसिकली एक कंप्यूटर है, सॉरी एक हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बिटवीन user and internet, and proxy server is basically another computer between user and computer। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे वो बात क्या थी हमारी, कि फायरवॉल के अंदर हमारा मेथड ये, हम किसी भी वेबसाइट को विजिट करते थे तो उसके लिए हम जो मेथड जो स्टेप्स हम परफॉर्म करते थे, वो स्टेप्स हमारे क्या थे कि सबसे पहले ये होता था कि यूज़र टाइप करता था किसी भी वेबसाइट का यूआरएल। लेकिन हमने ये बात की थी कि किसी भी वेबसाइट के अंदर जो हम वेबसाइट को बेसिकली हम विजिट करते हैं, तो हर वेबसाइट का बेसिकली हर each and every website is stored in a computer, and that computer in which website is stored, this computer is known as web server, and each web server has its own address. This address is basically known as IP address. There are different type of IP address. Like suppose we want to visit our website abc.com.pk, and the IP address of this website is suppose 15.16.17.18. Whenever a user wants to visit this website, means abc.com.pk, he need IP address of this website means 15.16.17.18. There are millions or billions of websites, so it is very much difficult for us to memorize the IP addresses of each website. What we do, basically we convert this IP address that is numerical into an alphabetical data, and we say that this website is abc.com.pk, and our ISP is the company which provides us internet. It maintains a computer. In this computer, there is a database of websites. Names means domain name and their IP addresses. This computer which stores domain name and IP addresses of website is known as DNS. This is basically DNS, domain name server. Whenever our user write down the IP address of the website, like 15.16.17, user types the IP address of the URL of the website, that is abc.com.pk. This URL is sent to the DNS server. DNS will look up the IP address of this website and then send this IP address to the web browser. And then web browser like 15.16.17.18, and then our web browser sends HTTP request to web server, and web server will send HTML data to our website.
to send HTML data to our website, our computer, our browser, basically the web server also needs our IP address. Suppose our IP address is 1.1.1.1. So we need to send our IP address along with the HTTP request. Then the web server can send HTML data to our computer. Now, the role of proxy server. Here, proxy server perform it important role when we want to visit a website. Proxy server hides the IP address of user, and whenever a user sends a request, HTTP request, it will send HTTP request along with its own IP address. Proxy server will remove this IP address from the request and attach its own IP address and send this request to the web server. Now, the proxy server's IP address is transmitted over internet. The web server will send HTML data to proxy server, and then proxy server will send this HTML data to the user. It means user's IP address is now more secure. This is the important function of a proxy server. Proxy server hides the user's IP address. This is the main function of proxy server. The second function, which is performed by the proxy server, is that proxy server maintains its own cache memory. It maintains its own cache memory. With the help of this cache memory, whenever we visit a website, proxy server stores the home page of the website in cache memory. Whenever we visit the website next time, the proxy server will display the website from its own cache memory, so it will increase the speed of the proxy server. So it will increase the speed of the proxy server. Right? ठीक है बेटा, तो ये आपका डिफरेंस हुआ प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल में. देखिए ये क्वेश्चन सेट हुआ आपका प्रॉक्सी सर्वर और फायरवॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए. स्पीड अप एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेब सर्वर बाय यूजिंग कैश मेमोरी. ये दिस इज डन बाय राइट. अच्छा, filters all internet traffic coming into and out from the user's computer. ये जो फिल्टर करने का काम कर रहा है ना, ये फिल्टर करने का काम जो है ये आपका जो है ये आपका प्रॉक्सी सर्वर, ये आपका जो है अब्बास ठीक है बेटा. अच्छा भाई, अब दूसरा क्या हुआ है कि फिल्टर्स ऑल इनकम. ये तो आपका प्रॉक्सी सर्वर भी ये काम करता है और फायरवॉल, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल वाले सारे काम करता है. हैज टू प्रिवेंट मेलवेयर इंक्लूडिंग वायरसेस एंटरिंग फ्रॉम यूजर्स कंप्यूटर. तो ये काम आपका जो है प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल दोनों करता है. कीप्स अ लिस्ट ऑफ अनडिजायरेबल वेबसाइट. जी ये दोनों ये काम करते हैं, ये दोनों ही जो है ये काम कर रहे होते हैं. अच्छा, फिर दूसरा हमारे पास क्या आ गया है कि फायरवॉल आर ओनली अवेलेबल एज हार्डवेयर डिवाइसेस. नहीं, फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों भी होते हैं. तो ये ठीक है. फायरवॉल अलाउ अ यूजर टू सेट रूल्स फॉर नेटवर्क ट्रैफिक. हाँ, फायरवॉल के अंदर आप क्या कर सकते हैं नेटवर्क ट्रैफिक के लिए. अच्छा, फायरवॉल विल ऑटोमेटिकली नहीं, आपको रूल सेट करने पड़ेंगे. फायरवॉल विल ओनली एग्जामिन ट्रैफिक. नहीं, ये काम नहीं है, और भी काम ये कर रहा होता है.
ठीक है बेटा। अच्छा भाई, तो ये भी फॉल्स हो गया। फायरवॉल इनक्रिप्ट नहीं, फायरवॉल इनक्रिप्ट नहीं कर रहा होता, ये इसका फंक्शन नहीं है। फायरवॉल कैन बी यूज्ड टू ब्लॉक सर्टेन वेबसाइट्स। यस, फायरवॉल बहुत सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकता है। अच्छा बेटा, जब हम फायरवॉल्स को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक जो नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मीन्स मेकिंग डेटा नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर अदर्स। ठीक है ना, जिस तरह ये हमारे पास एक डेटा है, ये जो डेटा है हमारा, ये नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर अदर्स है। ये आपकी समझ में नहीं आएगा कि ये डेटा क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या है हमारे पास, ये बेसिकली इनक्रिप्टेड डेटा है। जिस तरह ये ए बी सी डी को हमने ई को किससे रिप्लेस कर दिया है, डी को ए से, ई को बी से। अब इस डेटा को जब हम देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि डेटा क्या लिखा हुआ है। तो अगर हमारा डेटा जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, और इसको क्या किया इन्होंने, इनक्रिप्ट करके इस टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो टेक्स्ट है ये अंडरस्टैंडेबल फॉर अस नहीं है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। तो दिस टेक्स्ट इज नोन एज साइफर टेक्स्ट। याद रखें, ये वाला टेक्स्ट जो कि नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, दिस इज प्लेन टेक्स्ट। एग्जाम में 2 दफा ये क्वेश्चन सेट हुआ है कि उसने पूछा है कि ये जो टेक्स्ट है इसका नाम क्या है। तो बेसिकली दिस इज साइफर टेक्स्ट एंड दिस इज प्लेन टेक्स्ट, ये याद रखना है आपको। अच्छा, अगर हम सेम की यूज कर रहे हैं डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। लाइक हियर वी आई एम शोइंग यू एन एग्जांपल। इसमें हमने क्या किया, सेम की यूज की है। जैसा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक एक की दी हुई है हमारे पास, और हमसे क्या कह रहा है कि इस की को देखें, और ये कह रहा है कि ये एक डेटा लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करें। अब एल है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है या प्लेन टेक्स्ट है, ये साइफर टेक्स्ट है या प्लेन टेक्स्ट है, ये साइफर टेक्स्ट है। तो इसको हमें वापस क्या है, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, ये साइफर टेक्स्ट है। तो अब इसको हमें क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट को वी नीड टू कन्वर्ट इनटू साइफर टेक्स्ट। अब देखें ये एल है, तो एल किस में कन्वर्ट होगा, पी में। एल की जगह क्या आ जाएगा, पी। ये एफ है, एफ किस में कन्वर्ट होगा, ए में, तो इसकी जगह ए आ गया। फिर ये क्या है भी आपका, डी है, डी 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 किस में कन्वर्ट हो रहा है, एफ में। तो देखें ये पी एफ, एल एफ डी किस में कन्वर्ट हो गया, पी एफ में। तो हमने क्या किया है, एल एफ डी, ये पी एफ चैप्टर लिखा हुआ है, एल एफ डी को हमने एन ए एल जेड जी यू ई को हमने पी एफ में कन्वर्ट किया, यानी साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया इसके जरिए। फिर ये दे रहा है कि कंप्यूटर साइंस को आपको कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट में। तो हम देखेंगे ऊपर सी, सी की जगह क्या आ रहा है, एन। फिर हम देखेंगे ओ, ओ की जगह क्या आ रहा है, एम। फिर हम देखेंगे एम, एम की जगह क्या आया है, आई। फिर उसके बाद पी, पी के को हम कन्वर्ट करेंगे किससे, जंप, एल से। तो क्या हुआ है कि ये आपका प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ इसी के जरिए। बेसिकली दिस इज नोन एज इंक्रिप्शन की। इफ वी आर यूजिंग सेम इंक्रिप्शन की to convert a plain text into cipher text and cipher text into plain text, तो इस this method is known as symmetric key encryption। सिमेट्रिक के इंक्रिप्शन के अंदर एक इशू आता है, वो इशू क्या आता है कि वी नीड टू ट्रांसमिट अवर इंक्रिप्शन की टू अवर रिसीवर, सो एज अवर रिसीवर कैन रीड द डेटा। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये रिसीवर जो है डेटा को रीड कर सके तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट को हमें क्या करना है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इनक्रिप्शन की। अब हमें इनक्रिप्शन की भी सेंड करना पड़ेगी अपने रिसीवर को। जब रिसीवर को हम अपनी इनक्रिप्शन की सेंड करेंगे तो ये हो सकता है कि वो जो कि आपके डेटा को हैक कर रहा है, वो आपकी इनक्रिप्शन की को भी हैक कर ले। जब इनक्रिप्शन की को भी हैक कर लेगा तो फिर इट विल बी यूजलेस फॉर अस टू इनक्रिप्ट आवर डेटा। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा इनक्रिप्शन का मेथड यूज करते हैं इन विच वी हैव टू डिफरेंट कीज। वन की इज यूज टू एनक्रिप्ट द डेटा एंड अदर की इज यूज टू डिक्रिप्ट द डेटा। आपने देखिए, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे डोर्स हैं, उनके अंदर जो नॉब वाले डोर होते हैं, उन डोर्स के अंदर बीच में एक बटन होता है, वो बटन प्रेस कर दें तो हम डोर को लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये जो बटन जो डोर को लॉक कर रहा है, ये अनलॉक नहीं कर सकता। अनलॉक करने के लिए हमें क्या करना होता है, नॉब को मूव करना होगा।
नॉब के जरिए हम क्या करते हैं, डोर को अनलॉक कर रहे हैं, लेकिन इस नॉब को मूव करके डोर को हम लॉक नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स वी हैव two different keys. One key is used to lock the door and other key is used to unlock the door. जो नॉब के बीच में जो बटन है वो लॉक कर रहा है, और नॉब को जो हम मूव कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, डोर को अनलॉक कर रहा है. The same way is used. We have two different keys. One key is used to encrypt the data and other key is used to decrypt the data. It means we have two different keys. अगर हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये चीज ना, कि आपके पास जो है आप टू कीज को यूज कर रहे हैं टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा. अगर सेम की यूज करते हैं तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि की भी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन हैक हो सकती है. तो हम क्या करते हैं, एसिमेट्रिक की इनक्रिप्शन यूज करते हैं. एसिमेट्रिक की इनक्रिप्शन के अंदर वी हैव टू डिफरेंट कीज. One key is used to encrypt the data and other key is used to decrypt the data. अच्छा, अगर हमारे पास टू कीज है ना, तो इन कीज को हम टू टाइप में डिवाइड कर देते हैं. हम कहते हैं कि इनमें से एक की ऐसी होगी जिसको हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. वो की जो हम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दिस की इज नोन एज पब्लिक की. और एक की ऐसी होगी जो हम किसी को भी नहीं दिखाएंगे, वो क्या कहलाएगी, हमारी प्राइवेट की. नाउ वी हैव टू डिफरेंट कीज. अब होता क्या है कि पब्लिक की के जरिए भी डेटा को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और प्राइवेट की के जरिए भी हम डेटा को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं. अब अगर हम पब्लिक के जरिए डेटा को एनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर रहे हैं तो ये कैसे काम करती है, इसका फंक्शन आप देख लें. देखें बेटा, होता ये है कि अगर इन कीज की नेचर ये है कि अगर एक की डेटा को एनक्रिप्ट करेगी, देन अदर की इज रिक्वायर्ड टू डिक्रिप्ट द डेटा. लाइक सपोज वी हैव plain text and we have converted this plain text into ciphertext using public key. ठीक है, हमने क्या किया है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है पब्लिक की के जरिए. इफ वी हैव यूज्ड पब्लिक की टू encrypt our data, then this data can only be decrypted by private key. And if we have encrypt the data using private key, हमारा ये plain text है and we have converted it into ciphertext using private key. अगर हमने private key यूज की है, then it can only be decrypted by public key. अब हम कब यूज करते हैं public key को और कब यूज करते हैं private key को encrypt करने के लिए. देखें बेटा, suppose you are writing your ID and password in the 1 मिनट के अंदर ये अभी हो जाएगा. एंड हाँ, आईडी एंड पासवर्ड आप टाइप कर रहे हो किसी बैंक की वेबसाइट पर, देन यू वांट दैट दिस आईडी एंड पासवर्ड कैन ओनली बी रेड बाय द बैंक. तो आप क्या करोगे, योर बैंक विल ट्रांसमिट इट्स ओन पब्लिक की टू योर ब्राउजर. whenever you write down the ID and password, your browser will encrypt using bank's public key and transmit over internet. Bank will receive this ID and password and decrypt using its own private key. On the other hand, suppose you want to download some data from a website and you want to make it authentic that this data is original, there is no changes alteration in the data. You will download the data. The web server will encrypt the data using its own private key and publish this data. You will download the data and decrypt it. If data is decrypted by web server's public key, it means data is authentic. There is no alteration on it. देखें, ये देखें, if a message is encrypted by public key, it can only be decrypted by associated private key. And secondly, देखें, if a message is encrypted